Hello and welcome to EduRev. My name is Harshmeet Singh and I've been teaching Indian polity and history to UPSC civil service aspirants for more than 5 years now. In this video series, I will be discussing with you a summarized version of Class 6 History NCERT book. I don't need to repeat the importance of history NCERT, all of you are well aware. NCERT, specifically the history books, help you in building a basic understanding of many concepts. And many questions are asked directly from this book. We will be covering the entire Class 6 book in a series of 6 videos. This is the part 1 of that series. To begin with, the book tells you about how the early people lived and where did they live and how did they exactly survive. Now, some of the earliest people in the Indian subcontinent were the people who gathered food and hunted animals. So हमें ऐसा लगता है from our studies जो सबसे पहले लोग पैदा हुए थे, जो लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में थे, those were the people जो कि खुद का खाना इकट्ठा करते थे. They were the ones who hunted for their food, जो शिकार करते थे. Now, what was the location of these people? Importantly, the earliest people in the Indian subcontinent were seen in the Suleiman as well as the Kirthar Hills. Now, Suleiman and the Kirthar Hills are very, very important, and that is why what I'll try to do is I will try to tell you the exact location of these in the map so that it is easy for you to understand. The Suleiman and Kirthar Hills, as you can see, these are the Suleiman Hills and these are the Kirthar Hills. I'll show you a bigger map in the next slide so that it is easier for you to identify. As you can see, the earliest people that we found in the Indian subcontinent were not in today's India. आज की इंडिया में नहीं थे. They were more towards today's Pakistan and today's Afghanistan. Now, in the Suleiman and the Kirthar Hills, where the earliest people were found in the Indian subcontinent, वो लोग खाते क्या थे? Crops such as wheat and barley. So, wheat और barley ये कुछ ऐसे crops है which were seen in these areas. यहाँ पे इन लोगों के पास ये सारे के सारे crops हमने देखे थे. Also, people in these areas they started to rear animals और animals को rear करते थे जैसे कि sheep, goat, cattle in their villages. Now, as I said, I will show you where these locations are. These are the magnified location. If you want to see, यहाँ पे this is the Suleiman Hills. If you actually can see very clearly, it is almost on the border of Pakistan and Afghanistan. And these are the Kirthar Hills. Now, apart from that, in the Indian side also, there were people who were living from very, very early times. India में, if you see some of the earliest people or evidence of some of the earliest people, अगर आप देखोगे कहाँ मिला था, that was in the Garo Hills in northeast and the Vidyas in the west, in the central India. Now, Vidya ranges जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, these are very, very important. In fact, even today, आज भी माना जाता है कि the dividing line between South India and North India is the Vindhya ranges. Vindhya ranges के south में जो आप आ जाते हो, that is said to be the beginning of South India. जब आप विंध्या रेंज के नॉर्थ में रहते हो, it is said that you are in the northern part of India. विंध्या रेंजेस में सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के बारे में कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं, एंड इन द गारो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स कहाँ पर है? इफ यू सी टुडे दे आर इन मेघालय. सो टुडेज मेघालय हैव द गारो हिल्स. गारो ट्राइब भी है वहाँ पे काफी फेमस. अब विंध्या में क्या हुआ था? विंध्या में जो सबसे पहले क्रॉप हम मिले थे दैट वाज राइस. सो राइस का काफी एविडेंस मिला हमें विंध्या रेंजेस में. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो हमारी एंशिएंट इंडिया में थी दैट वाज द किंगडम ऑफ मगध. मगध कहाँ पे था? टुवर्ड्स द साउथ ऑफ गंगा. इफ यू कैन सी, दिस इज द गंगा रिवर. सो टुवर्ड्स द साउथ ऑफ गंगा, बेसिकली दिस पार्ट वाज अक्वायर्ड बाय द मगध रूलर. इसको मगध कहा जाता था. वी विल रीड अ लॉट अबाउट मगध इन योर हिस्ट्री. हम लोग आगे जाके और पार्ट्स के जब वीडियो देखोगे, यू विल कंटिन्यूसली रीड अबाउट मगध. मगध बहुत पावरफुल किंगडम था, बहुत सारे किंग्स है वहाँ पे. इनफैक्ट जो हमारी सबसे पहली ऑल इंडिया डायनेस्टीज बनी थी वो सब मगध में ही स्टैब्लिश हुई थी. एंड वी विल डिस्कस कि मगध में इतना स्पेशल ऐसा क्या था. जो मगध के रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, एज आई सेड, एंड दे सेट अप अ लार्ज किंगडम फॉर देमसेल्व्स. नाउ, हाउ वाज इट दैट आवर कंट्री वाज नेम्ड एज भारत, और हाउ डू वी कॉल इट एज हिंदुस्तान और इंडिया और दीज काइंड ऑफ वर्ड्स? ये वर्ड्स कहाँ से आए? Usually there are two names that are used
फॉर आवर कंट्री। एक तो इंडिया बोला जाता है और एक भारत बोला जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट स्टोरीज फॉर दीज टू, दोनों के लिए डिफरेंट स्टोरीज है कि वो नाम एग्जैक्टली आए कहां से। पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया। सी, जितनी भी अर्ली सिविलाइजेशंस हैं, अगर आप देखोगे, नॉट जस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया में, इजिप्ट में, चाइना में, जो भी अर्ली सिविलाइजेशन थी, द अर्लीस्ट मैन, एक बात सब में कॉमन थी। द कॉमन थिंग वाज कि वो सारी की सारी सिविलाइजेशंस वर नियर अ मेजर रिवर। क्योंकि सी, बाकी सब तो आप हंट कर लोगे, यू कैन गैदर फूड, आप कुछ खा लोगे, आप एनिमल्स हंट कर लोगे, बट पानी कहाँ से लाओगे? वाटर वॉज द मेन थिंग ऑन विच एवरी सिविलाइजेशन वॉज डिपेंडेंट। बिना पानी के तो सिविलाइजेशन हो नहीं सकती आपकी। दैट इज वाई एवरी सिविलाइजेशन, मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ सर्टेन रिवर ओनली। जैसे चाइना में सैंगपो रिवर, इंडिया में दैट वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी तरह से इजिप्ट में नाइल के आसपास था। तो बेसिकली इफ यू सी, ऑल दीज रिवर्स वर द वंस जिन्होंने लाइफ दी। सो ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर नियर अ रिवर ओनली। अब इंडिया में, एज आई सेड, वाज द इंडस रिवर। इंडस रिवर को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। सो सिंधु वाज द रिवर अक्रॉस विच और along which the Indian civilization was flourishing. अब when the Greeks came to India, when the Iranians came to India, ट्रेड करने के लिए, रूल करने के लिए, लॉट ऑफ देम केम टू इंडिया कब? अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ना उन्हें पता चला कि हाँ भाई ये रिवर है, इसको बोलते हैं सिंधु। बट इंटरेस्टिंगली, इन द ईरानियन लैंग्वेज, ईरान की लैंग्वेज में द लेटर एस इज नॉट देयर। लेटर एस को एच पढ़ा जाता है। मीन्स द ईरानियन कॉल्ड दिस रिवर हिंदू rather than Sindhu, they called it Hindu. And उनके हिसाब से द पीपल, जैसे अगर ये इंडस रिवर है, people living on the eastern side of Hindu river were the Hindus. So जो हिंदू हम कहते हैं आज का हमारा रिलीजन है, that religion was actually, the name was given from the Iranian language, क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू बोलते थे। So according to them, जो लोग हिंदू रिवर या सिंधु रिवर के ईस्टर्न साइड पर रहते थे, they were the Hindus. So हिंदू नाम या इंडिया नाम यहाँ से हम लोग का आया था। इंडस से सिंधु, सिंधु से हिंदू और हिंदू से इंडिया आ गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, other name that is given for our country was भारत। अब भारत कहाँ से आ गया? भारत was name of a tribe of people जिसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। We will discuss about Rigved in some of the later classes. Rigved, as most of you know, was the first Ved which was written by the Aryans. ऋग्वेद में कई सारी ट्राइब्स के बारे में जिक्र है, and one of the major tribes that are mentioned in Rigved was a Bharat tribe, or the most powerful tribe, और वहां से नाम आ गया भारत। So that is how our land is called either Bharat or India. Now, when you are an archaeologist, आप सोचो आप archaeologist हो and you are trying to see कि भाई हमारा पहले country कैसा था या history कैसा था। In order to find out about our past, हमारे past के बारे में जानने के लिए archaeologists use a number of ways. For example, archaeologists look for manuscripts. Apart from manuscripts, they also look for inscriptions or any other paintings, sealings, or let's say seals, coins. These are the kind of things which people look for. तभी वो देख पाएंगे ना आज से पहले क्या था। For example, आज से after 500 years, how will people come to know कि आज की लाइफ कैसे थी? आप व्हाट्सएप करते थे या फिर हाउ डिड यू यूज टू टॉक टू पीपल? अगर आप कोई बुक लिखोगे आज के टाइम पे एंड दैट बुक वुड बी फाउंड आफ्टर 100 years, लोगों को पता चलेगा अच्छा ये लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका क्रिकेट बैट है एंड आपका क्रिकेट बैट आपके जाने के बाद भी यही है, एंड देन आफ्टर 500 years समवन कम्स एंड सीज, गड्ढा खोद के अच्छा क्रिकेट बैट मिला, पीपल वुड कम टू नो अच्छा उस टाइम पे इसका कुछ हुआ करता था। सो दैट इज हाउ यू कम टू नो अबाउट इट। The evidences of history are usually found in many things. For example, manuscript. Manuscript क्या होती है? Manuscript are the books that are written, or not just books. Manuscript is any written material written on usually a softer material. For example, paper पे या palm leaf पे लिखी जाती थी. So उस time पे usually manuscript जो record लिखे जाते थे, they were written on a palm leaf or a specifically made bark of a tree called the birch. So birch करके bark of the tree होता था, उस पर लिखा जाता था। दिस वॉज ग्रोन इन दी हिमालयाज। अब ऑब्वियसली बात है, आप एक पत्ते पे लिखोगे या पेड़ की लकड़ी पे लिखोगे, सो इट वुड नॉट सर्वाइव। मोस्ट ऑफ इट वॉज ईटेन बाय इंसेक्ट्स, डिस्ट्रॉयड, और सर्वाइव नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को ज्यादा मिला नहीं। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स डोंट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर हैंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंस्क्रिप्शन मतलब कोई हार्ड सरफेस पे लिखा गया,
पत्थर पे, on a wall, on a pillar, when these things are engraved, they stay till a very very long time. So those are inscriptions. So ये अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं जिससे we come to know about our history. As I said, there are many books written पहले की जिससे कि हमारे archaeologists have come to know about the earlier life. These books were on a lot of subjects. कई सारे subjects पे books थी. Example, religious belief, practices, lives of the kings, medicine, epic plays. ये सब की सब चीजें थी. We will read about a lot of these. For example, आर्यभट्ट ने काफी सारी चीजें लिखी थी. सुश्रुत. These were brilliant people. Kalidas wrote a number of plays and many languages were used. South India में Tamil was used, in North India Prakrit was used, Sanskrit was also used. और ये सारे के सारे inscriptions जो हमें मिले थे, these were on hard surface, like stone or metal. For example, अशोक ने, King Ashok और Emperor Ashok left a lot of inscription on the pillars, on the stones, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले. Now, the earliest people had a very different kind of a life. Earliest people मतलब the people who did not know agriculture, जिनको as such खुद कोई खाना बनाना या खाना उगाना नहीं आता था. They are always moving. क्यों? For various reasons. For example, आप settled अभी क्यों हो? You are settled because you have a job at one place, right? या फिर आपकी एक प्रॉपर्टी है. अब उस टाइम पे तो ना प्रॉपर्टी थी ना जॉब थी, कोई ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो यहाँ रुकना एक जगह पे. So they are always moving. जहाँ उनको एनिमल दिखता था वहाँ चले जाते थे because they could hunt them. जहाँ दिखा कि यहाँ पे फ्रूट्स हैं वहाँ जाके रहने लगते थे. So they just always were on the move to collect plant produce ताकि कहीं से भी उनको खाने को मिल जाए. Any animal which could be eaten, they used to follow them. और इसीलिए वो हमेशा मूव पे रहते थे. They did not really settle. Now, क्यों मूव पे रहते थे? इसके 4 मेन रीजंस आपकी बुक में दिए हुए हैं. फर्स्ट, ऑब्वियसली, अगर वो एक ही जगह पे रहते, if they would have settled in one place, they would have eaten everything. अब एक ही जगह पे, फॉर एग्जाम्पल, if there are animals around you which you are killing and hunting, तो वो एक दिन तो खत्म हो जाएंगे ना. और you are eating the fruits from that particular area. fruits आप खाओगे तो fruits भी आप खत्म कर दोगे. fruits in order to grow again will take some time. Secondly, जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे, एनिमल्स यूज टू ऑल्सो मूव. सो अब एनिमल्स मूव करते थे तो लोग भी मूव करते थे उनके साथ साथ, बिकॉज दैट वॉज देयर सोर्स ऑफ फूड. तो जहाँ जहाँ एनिमल्स आएंगे वहाँ वो भी जाते थे. सो दे फॉलोड देयर मूवमेंट, क्योंकि अगेन सेटल होने का कोई कारण नहीं था. द थर्ड रीजन वॉज दैट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स गेव देम फूड. अब पूरे साल भर में तो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होगा which will keep on giving them fruit. So according to the season, they were just constantly moving from one place to the other place. And fourth, animals, plants, and every living being needs water to survive, as I said. Earliest people usually settled near the rivers. But क्या होता था कि कई बार they used to settle near small rivers. Now small rivers means वो rivers which are not perennial. Perennial मतलब rivers जिनमें साल भर पानी रहता है, which have glaciers as their water source. अब 12 महीने वहाँ पानी रहेगा. But there are some rivers that are seasonal. Seasonal मतलब वो rivers जहाँ पे season में एक या दो बार पानी आएगा. Only when there is good waterfall, then they will have water. Unless the rivers will go dry. So if you are living near a seasonal river, तो आप साल भर तो वहाँ पे नहीं रह सकते हो. So people were also moving when the rivers used to dry up. Now a major change happened. बहुत major change history में आया about 12,000 years ago. 12,000 years ago क्या हुआ? The climate of the world changed. इससे पहले we were living in a very very cold climate. हम लोग ice age में रहते थे. The climate was so cold कि जहाँ vegetation कुछ खास नहीं होता था. थोड़े बहुत ही animals होते थे, so you could not hunt many animals. About 12,000 years ago, the climate started to change. It started to become warm. जब warm हो गया तो people found it much easier to live their life. There were many more animals. कई सारे ऐसे animals आ गए which could be hunted, like deer, antelope, goat, sheep, cattle. Animals जो survived on grass वो आने लगे, क्योंकि इससे पहले grass भी नहीं थी इतनी ठंडे में. अगर आप देखोगे, when there is such a cold environment, such a cold climate, grass भी नहीं होगी. So grass emerged, animals dependent upon the grass came up, and that is when people also started to make stone tools. क्योंकि अब और एनिमल्स आने लगे और वेजिटेशन हुआ, तो लोगों को लगा इन्हें मारने के लिए, या फिर इफ यू हंट एन एनिमल, आप ऐसे तो नहीं खा लोगे, you will have to cut them into pieces, you will have to take out their skin so that the flesh comes out, मांस निकालने के लिए. So you need certain stone tools. Tools आपको चाहिए वेजिटेशन के लिए, हंटिंग के लिए, and that is what started to come up.
फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट कि अब आइस एज जा रही थी तो वाटर वॉज नाउ इन द लिक्विड फॉर्म, तो फिशिंग शुरू हो गई. वीट, बार्ले, राइस दे स्टार्टेड टू ग्रो, और इस तरह से द लाइफ बिकेम मच मोर कंफर्टेबल. दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ स्टोन टूल. अब देखो ध्यान से, स्टोन टूल्स में एक बात देखो कितनी कॉमन है. एवरी स्टोन टूल इज काइंड ऑफ पॉइंटेड, ताकि आराम से यू कैन हैव अ गुड इम्पैक्ट. अगर आप किसी को छीलना है या आपको किसी को मारना है, these kind of pointed stone tools were invented, and also these were easy to handle. आप आराम से पकड़ सकते हो and then you can hit. So these kind of stone tools, these are real stone tools that were found from those days. So ये examples हैं how different types of stone tools were emerging. Another very important thing जो हमें उस टाइम से मिली थी, which talks about the life of that time, were the rock paintings. Now the incredible thing is कि अभी तक हजारों साल के बाद भी these rock paintings have been found, ये अभी भी preserved हैं. Many of them were found in Madhya Pradesh, in South UP. They are mostly of wild animals, but they are drawn with great accuracy and skill. अब इन पेंटिंग से वी कम टू नो कि मोस्ट ऑफली मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम हैड डन सम वर्क. दोनों की दोनों ये काम इकट्ठे करते थे. हो सकता है कुछ काम वेमेन अकेले करती हो, कुछ काम मेन में बांटा गया हो, बट वी डोंट हैव मच क्लैरिटी. ये रॉक पेंटिंग्स एग्जांपल देखो आप. दीज वर रियल रॉक पेंटिंग विच आर फाउंड इन, फॉर एग्जांपल, भीमबेटका विच इज नियर भोपाल. If you see, these are very accurate paintings of animals, paintings of these kind of animals, people riding animals, people working. So the amazing part is the colors, the shape is still preserved even after thousands of years. So rock painting gives an excellent example of how the life was. Now slowly but surely people started to settle down. फूड गैदरर से, मतलब खाना इकट्ठा करने से, हम लोग आ गए कल्टीवेटर स्टेज पर. कैसे आ गए? बिकॉज दिस इज व्हेन एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू डेवलप. एक बार जब एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हो गया, देन पीपल हैड टू सेटल डाउन. क्यों? अब आप कहीं पे कुछ उगाओगे तो एक दिन में तो नहीं उग जाएगा. यू हैव टू वेट कि भाई कब तक देखो उगेगा, कब तक खाना मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, या वीट या बार्ले निकलेगा. सो पीपल हैड टू नाउ वेट बिकॉज दे वर बिकमिंग कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर वाज इन्वेंटेड. अब एग्रीकल्चर इन्वेंट हो गया तो उसके बाद पॉटरी भी आपको चाहिए, क्योंकि आप जितना उगाओगे एक दिन में तो नहीं खा लोगे ना, कहाँ उसको प्रिजर्व करोगे. सो यू नीड पॉटरी, यू नीड थिंग्स जहाँ पे आप उसको रख सको. सो एग्रीकल्चर के साथ अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. पीपल स्टार्टेड टू सेटल, पीपल स्टार्टेड टू इन्वेंट पॉटरी. ये सब कुछ एग्रीकल्चर से ही शुरू होता है. पीपल बिगैन लुकिंग फॉर प्लांट्स. लोग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते थे अब बर्ड्स से, एनिमल्स से, ताकि वो प्लांट से जो निकलेगा उसको खा सके. Women, children, they could also attract and tame animals. Animals को अपने पास टेम करने लगे, मतलब अपने पास रखने लगे. क्यों? ताकि एक तो एनिमल्स उनके प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें, और दूसरा एनिमल्स उनको खुद को प्रोटेक्ट करें. सो अ लॉट ऑफ चेंजेस वर हैपनिंग एग्रीकल्चर के साथ स्पेसिफिकली. हमने, जैसे मैंने बताया, अ लॉट ऑफ एनिमल्स वर टेम. डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था. द फर्स्ट एनिमल दैट वाज टेम वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखना होगा आपको. वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग मतलब आप भेड़िया टाइप से आप बोल सकते हो. दैट वाज द फर्स्ट एनिमल जिसको टेम किया गया था. जब लोगों ने प्लांट्स ग्रो करना शुरू किया, एज आई सेड, उनको एक ही जगह रहना पड़ा, पानी डालना पड़ा. दे हैड टू प्रोटेक्ट देम टिल दे गेव द फ्रूट्स. दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम. इसीलिए लोग सेटल होना शुरू हुआ, एंड दे बिगैन मेकिंग क्ले पॉट्स. क्ले पॉट्स क्यों बने? बिकॉज द एग्रीकल्चर वाज गिविंग देम गुड फूड्स. सी, the good part is when you settle near a river. अब river के near जब settle हुए थे लोग, the good part was कि because the soil was so fertile because of the river, कि उनको कोई बहुत effort नहीं करना पड़ता था. Even if by mistake कहीं पे कोई बीज चला जाता था, there used to be a plant automatically. So people were very lucky in that sense that they had a very fertile land with them and a good supply of water. अब जब settled life शुरू हुई तो हमें कई चीजें मिली यहाँ पे. Archaeologists found remains of burnt grain of plants के जो burn करके plants के basically burnt हम लोगों को पहले की चीजें मिली हैं. Animal bones have also been found, so we have seen कि animal bones were also seen from that particular time. इसके अलावा large number of crops were grown in the subcontinent. People also, in order to settle down, लोगों को घर बनाने पड़े. For example, Burza home which is in Kashmir, वहां पे पिट हाउसेस मिले. पिट हाउसेस मतलब गड्ढा खोद के नीचे जाके लोग रहते थे. आई विल शो यू अ फोटो ऑल्सो. इससे क्या होता था,
When there was cold weather, they were protected. They were also protected against the animals also. नीचे जाके रहते थे और ऊपर से ढक लेते थे उसको. There were steps जिससे आप नीचे जा सकते थे. This was a settled life जो बुर्जा होम में हमें एग्जाम्पल जिसका मिलता है कश्मीर में. यहाँ से भी स्टोन टूल्स हमें कई सारे मिले हैं. इन द पेलियोलिथिक टूल्स और एज ऑल्सो वहाँ से कई सारे स्टोन्स मिले हैं. ये जो लाइफ है जहाँ पे लोग सेटल हो गए एग्रीकल्चर की वजह से, दिस इज कॉल्ड नियोलिथिक लाइफ. सो नियोलिथिक लाइफ is marked by invention of agriculture, people settling down, people domesticating animals. ये था Neolithic life. यहाँ पे जो tools मिले they are more polished and have a finer edge. अब जो tools मिले उनके पास और ज़्यादा fine edge था इस टाइप से, मतलब वो अच्छे से और काट सकते थे, and they were used to grind other tools as well. This is an example of Burza home. As you can see, ये पूरा flat जमीन में गड्ढा खोद खोद के नीचे स्टेप्स आते थे और अंडरग्राउंड रहने की जगह गुफा टाइप की, केव टाइप की बनाई हुई थी, सो दैट दे कुड सेफगार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट बैड वेदर. नाउ आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू on the basis of what we have studied and on the basis of what can be asked from UPSC. This is question number 1. Read this very carefully. In the context of wheat and barley crops, which of the following is correct? First is, men and women began to grow crops such as wheat and barley as the first crops. Second is, these crops are grown in the Himalaya and the Vindhya ranges. Just take 10 seconds and you would now get to know the answer is first only. Second is incorrect. Why? Because wheat and barley were grown in the Suleiman and the Kirtha hills. Remember, in the Vindhya ranges, it was the rice that was grown. So Vindhya ranges did not have wheat and barley as the first crop. Wheat and barley were in Himalayas only, not in the Vindhya ranges. So the answer here is A. Remember this. Then I have another question for you. In the context of the name India, which of these is true? First, Iranians and Greeks who came to India 25 years ago called it Hindus or Indos, that the land which is east to the river, that was called India. Second statement is Bharat was used as a group of people who lived in the northwest and they were mentioned in Rigveda. As you would remember, both the statements are true. We have studied about this, how India got its name. I hope these are now clear to you. This brings us to the end of this particular video. As you would know, EduRev Infinity is an excellent platform for all the UPSC civil services aspirants. It has over 10,000 questions for your practice and amazing notes prepared by UPSC experts as per the examination level. Thank you so much for watching this video.